Hi guys, this is Ravita here, and you're listening to the Brown Girl Rants. How are you all? I hope you all are doing well. I hope you all had an amazing Eid. Eid just ended, so I hope you all had a great Eid. My Eid was fine. It wasn't the best Eid ever, लेकिन it was fine. I tried to make it good for myself. Tried to make it entertaining for myself. असल में मैंने मतलब I told in my last episode कि मेरे कोई प्लान्स वगैरह नहीं है कुछ ईद पे क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट क्रेजी मीटअप या फिर गेस्ट कम ओवर या फिर डिनर या फिर लंचेस ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन आई वॉज रियली टायर्ड क्योंकि वो पूरा रमज़ान का महीना और वो सब कुछ तो आई जस्ट वॉन्टेड टू रेस्ट तो और दैट एग्जैक्टली हैपेंड और मैं सेकंड डे सोच रही हूँ कि यार बहुत बोरिंग हो गया लेकिन लाइक आई वुड लाइक टू हैव सम पीपल ओवर लेकिन आई वॉन्ट लाइक टू हैव सम फॉर्मल गेस्ट ओवर जो आए और जिनसे आई डोंट टॉक टू मतलब कि जिनसे मेरी इतनी बातचीत नहीं है और वो बस आए और बस हाँ ईद मुबारक खैर मुबारक और बैठे और फिर चले जाए मतलब कि आई डोंट वांटेड दैट फॉर्मल गेस्ट लेकिन मुझे शुगर वाले गेस्ट्स चाहिए थे जिनके साथ मेरी बनती हो एंड वी कुड गो आउट वी कुड हैंग आउट मतलब कि कजन्स हो लेकिन दैट कुडंट हैपन तो इट्स ओके आई वेंट आउट विद माई सिबलिंग्स एंड माई फैमिली ईद के तीनों दिन फॉर डिनर तो दैट वाज फन दैट वाज रियली फन दैट वाज मतलब के दैट वाज द थिंग आई लुक दैट वाज द मोस्ट I looked forward to for Eid. उसके अलावा कुछ नहीं था हाँ आई मैनेज टू गेट अप एट 5 a.m. इवन दो आई स्लेप्ट इन एट 3:30 और मैं 5 बजे फिर उठ गई क्योंकि आई वॉन्टेड टू प्रे फॉर ईद और उसके बाद मैं पूरा दिन नहीं सोई तो आई स्पेंड द होल डे ऑफ ईद विद माई 1.5 hour ऑफ स्लीप विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन क्योंकि आई स्लीप अलॉट बाकी दिनों में तो इट वॉज दैट मतलब क्रेजी फॉर मी I wasn't going insane or I didn't want to take the Eid nap क्योंकि मुझे था कि नहीं ईद है आज और I have to celebrate it. I had the option to just lay in bed all day और फिर मैं अपना नाइट सूट पहन के फिरती रहती लेकिन when I had a new suit तो why shouldn't I wear it, why shouldn't I get ready, why shouldn't I take pictures. So I think even though there was nothing really happening लेकिन I tried to make it exciting for myself और मैं तैयार हुई I took pictures और वी हैड फन आई हैड फन विद माई सिबलिंग्स तो इस वजह से ईद वॉज गुड आई और मैंने आई मैनिफेस्टेड दैट कि मुझे रेस्ट करना है ईद पे तो आई तो रेस्ट हुआ है लेकिन आई मतलब कि मैं इस वक्त इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से आराम किए जा रही हूँ टुडे वी हैड अ गेस्ट कम ओवर लेकिन आज ईद नहीं थी और इट वॉज वेरी चिल फाइन तो आई एम सो हैप्पी टू बी बैक इन द रूटीन और क्योंकि थोड़ा सा स्लीपिंग स्केड्यूल अभी भी थोड़ा ऑफ है लेकिन फिर भी इट्स नाइस टू बी बैक इन दैट मतलब के रूटीन वापस से और आई हैड अ ग्रेट ईद आई एम वेटिंग फॉर नाउ ईद उल अज़हा क्योंकि वो 2 महीने बाद है एंड आई नो मतलब कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ईद उल अज़हा आ जाएंगे एंड दैट वुड बी अगेन वेरी एक्साइटिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट अगेन लेकिन अभी फिलहाल ईद जस्ट एंडेड तो नाउ वी आर back in that work mode और study mode और इंटरेस्टिंगली जिस दिन ये पॉडकास्ट आनी है तो आई थिंक उस दिन हम पहला वर्किंग डे है तो इफ यू गाइज आर लिसनिंग टू दिस ऑन वेडनेसडे or whatever day तो or you are finding it difficult to get back in that routine क्योंकि obviously एक पूरा month was like a festive month or both it was like a festive month and our whole routine was changed we were taking it easy we were enjoying it हम मतलब के बहुत कुछ we were eating inappropriately क्योंकि हमें था कि ओ एक ही मंथ है तो लेट्स जस्ट मतलब के हैव फन एंड लेट्स एंजॉय एंड मतलब के टेक थिंग्स इजी लेट्स डोंट वर्क दैट मच लेकिन अब फाइनली जो है वो सब कुछ खत्म हो गया एंड इट्स हार्ड टू गेट बैक टू दैट रूटीन और इट्स सैड ऑलवेज टू से फेयरवेल टू रमज़ान और ईद और मतलब कि बहुत दुख होता है कि ओ इट्स ओवर और लेकिन वी हैव टू मतलब के switch and as a human we have to adapt to the change that is given to us and मुझे जब मैं छोटी होती थी तो आई यूज टू बी वेरी सैड ऑन द थर्ड डे ऑफ ईद के पास खत्म ईद और मतलब कि आई यूज टू बी वेरी सैड
कि अब स्कूल जाना पड़ेगा. लेकिन now growing up, I think it's a part of adulting that now I am so excited to get back in the routine और टू डू थिंग्स जो मैंने पॉज पे लगाई हुई थी पिछले एक महीने से या पिछले कुछ अरसे से. ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज सैड कि रमज़ान जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी जो मैं नहीं कर रही थी, तो आई वॉज एक्साइटेड टू स्टार्ट दोज थिंग्स ओवर. एंड as I said before that, I always try to find excitement in the things that coming up, क्योंकि वरना इस तरह तो बंदा मतलब कि it would be sad for us to say goodbye to the old stuff kyunki if we are not excited for the stuff that is ahead of us. And the topic for today's podcast is related to that, ke how to thrive this summers. So if you are feeling lazy, or if you are laying in bed, or you still have that Eid hangover, or you're still not able to do what you want to do, मतलब कि you're still not able to get that work done जो कि पिछले एक महीने से pause पे लगा हुआ था, and you are still not able to get back to that normal routine, so this podcast is for you क्योंकि I feel like कि you will enjoy this episode and you will feel productive after listening to it, and you will feel like being productive after listening to it. So I hope I give you some good tips, or let's just go into that podcast. हाँ, last episode में I added those transition जब मैं एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे हो रही थी. it was like those transition, it was like ऐसे करके ट्रांजिशन थी. I enjoyed it so much, I liked it so much, और अब I'm gonna add it on every I'm gonna मतलब के add that transition in every clip switch ever, and you have to tell me if you like it or not. I think it was really good. तो let me know if you enjoyed it or not. But it was very मतलब कि it was fun क्योंकि वैसे अगर आप कट करके फिर से बोलना शुरू करो तो it's अजीब. लेकिन क्योंकि मैंने वो लगाई हुई थी बीच में, तो मुझे लगता है कि इट वाज मतलब कि इट वाज फन एंड इट वाज प्लेजेंट टू हियर. नॉट प्लेजेंट, लेकिन एक पैटर्न बना हुआ था कि ओ अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, या बीच में ब्रेक लिया. आई थिंक अ कट, एक आप बात करो उसके बाद कट और फिर दूसरी बात आप स्टार्ट कर दो, तो वो ज़्यादा सही नहीं लगता. आई डोंट नो, आई कैन एक्सप्लेन इट, बट आई इट मतलब इट फेल्ट गुड. तो लेट मी नो हाउ यू फेल्ट. So summer is approaching. Not really. Summer have approached. Summer have already approached. Or I really wanted to make this video like in the start of April or in the end of March. लेकिन क्योंकि रमज़ान था, तो again we were in that mode, or we were taking a lot of things easy. We weren't being that hard on ourselves, और हमारी बहुत सी activities जो थी वो pause पे थी. तो और मतलब कि we were गोइंग विद दैट मंथ विद न्यू हैबिट्स, और मतलब कि हम बहुत सी चीज़ें जो थी जो हम शायद पूरे साल मतलब कि नहीं करते, वो हमने उस महीने में अडेप्ट की हुई थी इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट मंथ. तो आई थिंक कि अब इट फील्स मोर समर की, तो इस वजह से आई थिंक इट वॉज अप्रोप्रिएट फॉर मी टू मेक दिस एपिसोड नाउ. और अभी भी मतलब कि ईद के दिन इट वॉज सो प्लेजेंट कि हमने पंखा नहीं चलाया हुआ था, और इट्स स्टिल वेरी प्लेजेंट कि एक एक हफ्ता ज़रा गर्मी होती है, लेकिन उसके बाद इट गेट्स वेरी प्लेजेंट. और अभी भी आई एम स्टिल इन माई स्टोर रूम. आई टोल्ड यू ऑल लास्ट वीक के मैं स्टोर रूम में बैठी हूँ एंड इट्स सो हॉट, लेकिन मैं उसी स्टोर रूम में बैठी हूँ, लेकिन इट्स सो प्लेजेंट कि आई डोंट फील द नीड टू हैव अ फैन इन हेयर. तो दैट्स रियली गुड ऑनेस्टली. लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा कब तक चलेगा और कितनी देर हमारा हम खुश इस तरह रहेंगे. लेकिन समर इज अप्रोचिंग, एंड एवरी वन, मोस्ट ऑफ द पीपल, या एवरी वन इन पाकिस्तान रियली डोंट लाइक समर, क्योंकि हमारे समर्स यहाँ पे बहुत इंटेंस होते हैं एंड वी नेवर लुक फॉरवर्ड टू इट. और इट्स वी आर ऑलवेज सैड, नॉट सैड, लेकिन वी आर ऑलवेज not happy in summers, or we always wait for fall and winter, or we always like make plans in those season, क्योंकि समर में हमारा होता है कि वी हैव टू स्टे होम एज मच एज वी कैन, और हमें नहीं ज़्यादा आउटिंग करनी क्योंकि ऑब्वियसली इट्स सो हॉट. लेकिन जैसे जब मतलब कि व्हेन आई गॉट द एक्सपोजर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वहाँ मैंने देख के रियलाइज किया कि ओ दैट्स मतलब कि उनके केस में इट्स ऑपोजिट सिनेरियो. दे वेट फॉर समर्स फॉर देयर एक्टिविटीज, और मतलब कि उनकी शादियाँ भी सारी उसी सीजन में होती हैं. लेकिन फॉर अस इट्स ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे समर इज़ वेरी इंटेंस एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव एन
air conditioner in our home. We have, but we don't have it on for 24/7 in our every part of the home, क्योंकि हमारा एक ही part में होता है. तो obviously for them it's different, लेकिन for us it's a very, मतलब कि एक तो it's very hectic क्योंकि सारे exams जो हैं as a student, सारे exams are in summers. और उसके अलावा जो है obviously majority of the month it is summer. तो that too, लेकिन मतलब कि it's not that happy month for people in Pakistan. We never look forward to it. लेकिन I'm here to change your point of view about it. लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि oh my god summer is so good or love it ये वो. लेकिन I would try to make it better for you क्योंकि you still have to be in it and you have to go through it. You can't change anything about it. So why not just try to survive it, not just survive it but thrive in it. मतलब कि we are not here on a survival mode, हम thrive करना चाहते हैं यहाँ पे. तो और I think that the whatever is coming could be much more exciting or happier for you if you associate the things that make you happy in that season. The pause was very awkward, लेकिन मैं मतलब कि ढूंढ रही थी कि what word to use. लेकिन I don't think I made any sense, so I'll try to explain it again. The thing that are coming, the time that is ahead could be much more exciting for you if you try to associate the things that make you happy with, or that makes you feel excited with that time that is coming. कि अगर कोई, मैं जैसे मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा है या मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ और मैं अब नेक्स्ट अपनी जिंदगी के उसमें जा रही हूँ फेज में, तो आई हैव टू लुक फॉर द थिंग्स दैट मेक मी एक्साइटेड और मेक मी हैप्पी. और इट कुड कैन नॉट बी, मतलब कि बहुत बड़ी थिंग्स के बहुत बड़ी थिंग्स मतलब कि इट कैन नॉट बी अ वेरी ह्यूज थिंग के ओ ये होगा और मैं ट्रिप पे जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी. नो, इट कैन बी एज लिटिल एज गेटिंग टू वॉच योर फेवरेट शो और रीड योर फेवरेट बुक और गेटिंग टू ईट योर फेवरेट फूड. मतलब इन समर्स आई एम टेकिंग इट, मतलब कि मैं उस एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ. तो आई थिंक दैट इट्स ऑलवेज मोर बियरेबल एंड नॉट जस्ट बियरेबल बट enjoyable for you if you see excitement in those things, and if you attach things with that season or that phase that is coming up that could make you feel excited or make you feel happy. I hope that made any sense to you. लेकिन मैंने ये बात पहले भी की हुई है in how, मतलब how to be productive, कि you have to be excited for the things that coming, वरना you would be sad waking up and trying to proceed that day. So you have to like मतलब के think of the things that would make you happy and excited. तो दिस इज मतलब कि दिस मतलब कि वी आर ऑलरेडी, हालांकि मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी लेकिन वी आर ऑलरेडी इन इट. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. तो वी हैव टू मेक इट अ बिट एक्साइटिंग फॉर अस. वी हैव टू थ्राइव. वी हैव टू deal with this. It is as it is. हम इसको avoid नहीं कर सकते. It's not in our control. Or we can't have an air conditioner that is on 24/7 in the house. We cannot stay in the house. Obviously, मतलब I think I have the privilege to stay in the house. लेकिन obviously अगर कोई university में, or if someone is working a physical job, तो they have to. लेकिन I मतलब कि I had to go out for the past 22 years too. So it's not like I had this privilege since for forever. So, or maybe I don't know, it would be different for me the next year. तो obviously मतलब it's not like कि मैं यहाँ बैठ के लोगों को ज्ञान दे रही हूँ जब I myself haven't been through that. I have. तो मैं ऐसे ही मशवरे दे रही हूँ. Please don't come at me. लेकिन that was the very first thing that I would wanted to tell कि we have to be excited, and this podcast is gonna help you with that. Now, I am not here to tell you all a whole bucket list जो कि मैंने अपने से सिर्फ देख के बनाई हो, अपनी आगे की रूटीन को देख के और अपना स्केड्यूल में शेयर कर दूँ.
or which would be unrelatable to you all and which you all won't be able to follow. I'm here to more talk about the approach. You would still be doing the things that you need to do, that you have to do for the daily, in the day-to-day work, but your approach to those things would be different. But after hearing this podcast, hopefully, तो I am here talking about the approach and the mindset, क्योंकि मुझे लगता है कि happiness, मतलब कि at the end of the day we want to achieve happiness, or we want to be happy in whatever we do, or happiness comes from a positive mindset. So I am here to talk about mindset and approach towards the things you have to do this summer. And I'm not here to share कि oh do this या फिर अपनी routine ये रखो, मतलब कि obviously I'll tell 2 3 things that you can realistically add into your lifestyle, लेकिन I cannot tell you something extra that could be oh सुबह 4 बजे उठ के morning walk पे जाओ, when that doesn't fit to your schedule. You know what I mean? So I'm here to talk more about the approach towards things that you have to do in daily life. क्योंकि at the end of the day we want to achieve happiness, we want to live in the moment, we want to be the best version of ourselves, and we have to work with the things that are given to us. We cannot like unrealistically imagine the things. Obviously I love watching अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन उनकी जिंदगी मेरे से बहुत डिफरेंट है, तो मैं उनको देख के अपनी schedule set नहीं कर सकती, क्योंकि they are living a very different life. Obviously it's very entertaining to listen to them, लेकिन I am not here to talk about those unrealistic things that you cannot relate to, and we have to make the most out of our time. And we मतलब कि मेरा basically गोल भी यही है कि क्योंकि समर्स में वी मोस्टली गेट लेजी एंड वी डोंट वांट टू डू वर्क, हम कहते हैं कि वो बाद में करेंगे, सितंबर अक्टूबर में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो करेंगे, मतलब कि वी आर, हम तो वैसे मतलब कि मैं तो पर्सनली विंटर्स में भी लेजी होती हूँ कि ओह जब मौसम थोड़ा सा ठीक होगा तब करूँगी, तो दैट इज़ मे बी a part of my personality. लेकिन we really hate summers, मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन we have to go through it, and we have to make the most out of our time, क्योंकि time is precious, time is money, और I don't want us to remember this time, or the only thing we could remember is us scrolling through TikTok or Facebook or Twitter or Instagram. If you hear any background noises, तो please ignore it. I can't do anything about it. Or please tell me a way to please find a way so I can monetize this podcast, so I can have my own studio और वहाँ पे ऐसा कोई background noises ना आए, लेकिन for that you मतलब कि until that time you have to bear with that. ठीक है? So what I was talking about is that we have to make the most out of our time. We have to um, be the best version of ourselves. Obviously, that's the constant goal. Ke even if I'm making this episode about summer, it's matlab ke we are still doing the things we would do, लेकिन we are doing it in a better way, or we are trying to make our lives better for ourselves, or we are trying to make things better for ourselves, and we are doing the things that are in control of us, लेकिन we have to deal with the things that are given to us. ठीक है? We cannot change anything about it. Again, मुझे लगता है मैं बातें रिपीट कर रही हूँ, लेकिन बात यही है कि work with what you have and what you can't change. So we have to work with what's given to us, and we have to do the best with what's given to us. ठीक है? I hope that made any sense. I think I'm repeating. I hope I'm not. लेकिन let's just move into the habits, क्योंकि enough of this lecture, TED talk, positive reflection, and let's get into the real deal. Okay, let's just talk about our main problem with summer. Why we hate summer so much. So we hate summer because
It's summer. The heat that comes with it, the intense heat that comes with it, and obviously you can't do a lot of tasks अगर इतनी गर्मी है बाहर. लेकिन now this is the thing that I want to tell you all. लेकिन you all will be like, really Rabia, we are done hearing that. मतलब मुझे पता है कि आप लोग सब पक गए हैं ये चीज सुन सुन के, मैं भी पक गई हूँ, लेकिन it works guys, it's real. And the thing is to wake up early in the morning. I know कि you are hearing this since बचपन, लेकिन here's my explanation. See, whatever task you have for the day, whatever you have to get done, you can do it early in the morning when the heat is not that intense as compared to doing it in the evening. ऑब्वियसली अगर आपकी कोई स्केड्यूल्ड चीज है जैसे क्लास है तो वो तो ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर कोई मीटिंग है तो वो तो आप नहीं सुबह के टाइम रख सकते, लेकिन क्लास इज नॉट आउटडोर, राइट? वो आउटडोर चीज नहीं है, आपकी मीटिंग आउटडोर नहीं है, आपकी मीटिंग तो एसी में होगी तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि क्लास, मतलब कि अटेंडिंग अ क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट to do in summers, क्योंकि you're still in a class which if you're lucky enough तो शायद उसमें AC लगा हुआ and it still has fans. I hope so. लेकिन I don't think class um, is the most difficult part. और obviously जो time recess का होता है बीच में, not recess लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में, if you are in university or you have lectures in between जहाँ पे you are not allowed to be in the class, मतलब कि free lectures हैं, बीच में free time है, because there's still library, there's still empty classrooms. मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी तो हम हमेशा we would be finding AC वाले कमरे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ताकि हम उनमें जाके बैठ जाएं. देयर वुड बी रूम्स जो कि जिनमें क्लास नहीं हो रही होती थी जिसमें आप जाके बैठ सकते हैं, तो यू कैन अवॉइड हीट, और यू कैन स्टे एट होम अगर यू आर स्टेइंग एट होम. आई एम टॉकिंग अबाउट द टास्क लाइक यू हैव टू स्टडी. ठीक है, नंबर वन, क्योंकि बहुत बहुत से मुझे लगता है लोगों की अब शायद यू विल गेट वैसे ही ऑफ प्रिपरेशन हॉलीडेज, क्योंकि a lot of people are going to give board के एग्जाम्स, तो मे बी you will have preparation holidays or maybe your schedule will be different. And even if you are going to university or college or you have to study, I would really highly recommend to study in early in the morning, 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, क्योंकि that time it's very peaceful. एक तो your mind is much more active when you wake up and then study. मतलब कि you grasp मुझे इसका उर्दू वर्ड भी नहीं पता कि मैं एक्सचेंज कर स्विच कर लूँ उस पे. यू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स मोर, यू आर मोर एक्टिव. तो आई थिंक के वेकिंग अप अर्ली वुड रियली जस्ट मतलब के हेल्प विद द प्रॉब्लम कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से यू कांट गेट योर टास्क डन, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टडी, or even मतलब कि there is some work that you can do anytime. तो I would really recommend to do it early in the morning जब गर्मी इतनी इंटेंस नहीं होती, आपका दिमाग एक्टिव होता है, as compared to doing it जब गर्मी is on its peak, या फिर आपको समझ भी नहीं आ रही क्या करना है. सेकेंड थिंग इज कि जब यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग so you have time for yourself, okay? And obviously you can find time for yourself any time of the day. You can find time for yourself at the night for an hour or so. Lekin there is a difference between having time for yourself, having an hour for yourself in the morning, than to have time for yourself in the night, क्योंकि at the night you are tired, आप थके हुए होते हो और आप दुखी होते हो थोड़े थोड़े, क्योंकि मतलब कि मुझे लगता है कि अगर आप इफ यू आर गिविंग योरसेल्फ टाइम एट द नाइट, so you'll think more about getting sleep, or you will be tired, so you will be sad, or you can't really like, you will think about the things that would bring you a peaceful sleep. I don't know if that makes any sense. लेकिन you would be tired, so you won't think about productivity, क्योंकि you would be, आपके दिमाग में ज़्यादा वो चीज़ें चल रही होंगी जो आपको इमोशनली कंफर्ट कर रही हैं, या फिर
मतलब कि there would be more emotional stuff going on in your mind because you will be so tired and you don't want to do anything. लेकिन if you're giving yourself time in the morning, so it would be more like, oh, I have to do this today. You will prepare yourself mentally, you will be more productive क्योंकि you have your whole day ahead, your mind is fresh and everyone else in your home is sleeping क्योंकि मेरे घर में तो everyone wakes up late. तो whenever I wake up early in the morning, whenever I used to wake up early in the morning, so I used to have like solid 3 to 4 hours before anyone else wakes up to have time for myself, and it used to be the best thing ever. So I think this is enough to convince you that waking up early in the morning would be a good thing to do this summer. So you should really think about it. It doesn't really have to do with productivity जो मैंने अभी points बताए हैं. नहीं, it have to do with productivity actually. लेकिन it's not like you have to be a morning person because it's मतलब because it's a good habit. लेकिन it would really help you to get your tasks done. Obviously, it's a good habit too. Or you will have your whole day ahead. Or I don't think I think you can personally मेरे लिए क्योंकि I am also struggling with waking up early और I sleep very late, I wake up very late और उसकी वजह से मुझे दिन बहुत छोटा लगता है. जब मैं ईद की नमाज के लिए उठी हूँ मुझे दिन इतना लंबा लगे और इट फेल्ट सो गुड. तो मैंने कहा कि यार आई मिस दैट, आई मिस मतलब कि हैविंग अ लॉन्ग डे क्योंकि देन यू विल हैव द होल डे. और जब आप 1 12 1 बजे उठ रहे हो तो आधा दिन तो आपका वैसे ही गुजर गया है. एंड आई एम रियली ट्राइंग टू स्टडी फॉर समथिंग और मुझे पढ़ने का नहीं टाइम मिलता. तो आई मतलब कि मैंने अपने आप को बताया कि रबी इफ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम यू कैन मतलब do that. तो इस वजह से आई थिंक कि इफ देयर समथिंग दैट यू आर नॉट फाइंडिंग आउट टाइम टू डू तो मतलब schedule it in the morning or you will मतलब get it done. You have the whole day. I don't know how to explain this, but waking up late, by waking up late you have much more time than sleeping late at night क्योंकि तब once the sun sets you are like done, you're in sleep mode, you're in peaceful mode, your brain is more like, oh, I have to watch this movie, I want to do this, or you want to scroll. लेकिन सुबह के time you have your whole day and you can sleep at night or you will have much more time. मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा क्या explain करूँ लेकिन waking up early in the morning is gonna be a good have मतलब कि is gonna be proven good for you. So अगर आपको कोई टास्क करना है जो आपको पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिल रहा और it's annoying तो try to get it done in the morning when everyone else is sleeping or try to put your mobile aside. Now I मतलब कि आज मैं एक podcast सुन रही थी and I have a really good solution for how to wake up early in the morning. एक जो नंबर 1 शी सेड दैट कि हम अपना मोबाइल जो है जिसमें हम अलार्म लगाते हैं वो सेट एन अलार्म एंड वी पुट द मोबाइल असाइड फ्रॉम अस ऑन आवर व्हाट्स दैट थिंग कॉल्ड ऑन आवर साइड टेबल. ओके, लेकिन वो हमारी इतनी अप्रोच में होता है कि इट्स वेरी इजी फॉर अस टू ग्रैब दैट एंड turn that alarm off and sleep again. So what we have to do is that we have to put a mobile in another room or in another space where which is not very approachable for you और जहाँ आपको मोबाइल बंद करने के लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा and it's bothering you, the ringtone is मतलब कि the alarm whatever tone is bothering you, so you have to wake up and switch that off and you are already मतलब कि you already got up from your bed so tada. लेकिन that अच्छा खैर ये मैंने क्या किया है लेकिन that I think was a very useful trick नहीं tip. So I would do that tonight actually and I will let you guys know. I think you all should try that too. और मेरे बेड के बिल्कुल सामने मेरी स्टडी टेबल है तो मैं उस पे मोबाइल रखूंगी क्योंकि अगर मैंने किसी और कमरे में रखा तो फिर बाकी सब भी ऑब्वियसली उठ जाएंगे. तो लेकिन मतलब कि आई हैव टू गेट अप फ्रॉम माई बेड टू स्विच दैट ऑफ और फिर आई वुड एक्चुअली गेट अप और देन इट वुड बी मतलब कि देन आई वुड गो स्ट्रेट इन द बाथरूम एंड वॉश माई फेस और मेरी आंखें फिर खुल जाएंगी इंशाल्लाह. आई एम मैनिफेस्टिंग दैट. लेकिन और दूसरी चीज शी सेड दैट वी कैन स्लीप विद आवर ब्लाइंड्स खुले हुए. हाउ टू एक्सप्लेन दैट मतलब कर्टन खुला हुआ ताकि जब सूरज आपकी आंखों पे पड़ेगा
और जब आप मतलब कि दिन हो जाएगा और आपकी आंखों पे पड़ेगा तो फिर आप खुद ही उठ जाओगे। वी यूज टू स्लीप आउटसाइड बचपन में, और ऑब्वियसली जब सुबह होती थी तो वी ऑल यूज टू गेट अप एंड गो एंड स्लीप इनसाइड, लेकिन वी हैव द ऑप्शन टू नॉट स्लीप, मतलब कि इट वर्क्स। खैर, दैट वाज नॉट रियली हेल्पफुल जो मैंने एग्जांपल एंड में दी है, लेकिन इट वर्क्स, मतलब यू विल वेक अप। लेकिन मुझे ये अलार्म वाली चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि sleeping with your blinds खुले हुए is not something I am comfortable to do अभी फिलहाल। और obviously I have my sister sleeping aside too, लेकिन obviously she has to go for college too, so I can do that, लेकिन it's not comfortable। We have our neighbors window, मतलब के right in front of, we have our neighbor's window बिल्कुल सामने, right in front of our window, मतलब कि it's like that टेलर स्विफ्ट सॉन्ग जिसमें वो यू बिलोंग विद मी, जिसपे मतलब कि दे कुड रियली सी ईच अदर फ्रॉम देयर विंडो एंड कम्युनिकेट, यहाँ पे बिल्कुल वही सीन है। तो आई कांट रियली लाइक डू दैट। तो लेकिन द अलार्म थिंग इज गुड। क्या बकवास कर रही है। खैर, टू द नेक्स्ट पॉइंट। The next thing is that I told that in the productivity podcast too, okay, we need to have intention for the day. We need to have our top priority. कि आज के दिन मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, आज के दिन आई हैव टू arrange my wardrobe, आज के दिन I have to this, आज के दिन I have to do that, like the most important thing you have to do। और वो obviously if you woke up early in the morning and you are मतलब के brainstorming or you're giving time to yourself for planning your day, so you can figure out that what's the most important thing I have to perform today, I have to do today, ताकि you can मतलब डू इट, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट्स ऑन योर माइंड। मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ, क्योंकि आई हैव 3 असाइनमेंट्स, मतलब मुझे 3 असाइनमेंट्स करनी है, और फिर जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन इफ आई हैव द टाइमलाइन इन माई हेड कि ओ मुझे ये असाइनमेंट इस दिन सबमिट करानी है, ये असाइनमेंट इस दिन सबमिट करानी है, और ये असाइनमेंट इस दिन सबमिट करानी है, तो फर्स्ट आई विल डू दिस, देन आई डू दैट, एंड देन आई डू दैट। तो मतलब कि आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप बहुत ओवरवेलम हो जाओगे। तो थिंक अबाउट वन थिंग एट अ टाइम। एंड अगेन, इफ यू मतलब कि आई मिस दैट पॉइंट इन द मॉर्निंग वाला जो मैं कह रही थी, लेकिन यू मतलब कि अगर यू आर वेकिंग अप early in the morning as a student, so you can even revise your lecture। I personally in my university time loved it कि जब मैं किसी lecture में बैठी हूँ, मतलब कि I'm in the lecture, it would be much more less stressful to for me to get in a class जब मुझे पता है कि oh I know I revised the last notes, I know what we gonna study in this class, and I just revised it today। तो that really helps me। तो आई थिंक कि अगर यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो यू कैन रिवाइज। और मैं सोचती थी कि ओ मैं यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी, बहुत टाइम है, स्पेशली इफ यू हैव क्लासेस इन इवनिंग, तो आपको कि हाँ सुबह बड़ा टाइम है आप कर लोगे, यू वॉन्ट डू इट। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप मतलब कि इफ यू हैव द प्रिविलेज टू गो टू यूनिवर्सिटी बाय योरसेल्फ, तो आप थोड़ा सा वेट करके वो चीज़ करके यूनिवर्सिटी जाओ, लेकिन गेट योर टास्क डन, एटलीस्ट गेट योर टास्क अरेंज इन योर हेड यूनिवर्सिटी जाने से पहले, कि अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मेरा फ्री लेक्चर है, तो इस फ्री लेक्चर में मैंने ये वाली असाइनमेंट करनी है, ये वाले क्विज की प्रिपरेशन करनी है, ये करना है। अगर आप कुछ प्लान नहीं करोगे ना, तो देन यू विल स्पेंड द नेक्स्ट 2 आवर्स दैट इज योर फ्री टाइम गपशप में, या कैफे में बैठ के आराम से गपशप कर ली, या फिर एसी वाला रूम ढूंढ लिया, या लाइब्रेरी में बैठ के हंसी मजाक कर लिया। तो यू हैव टू प्लान अहेड कि ओ मेरा ये टाइम फ्री है एंड आई हैव टू डू दिस दिस दिस, तो आई डू दिस इन दैट टाइम। ठीक है, और इफ यू कांट डू दिस तो वो करके यूनिवर्सिटी जाया करो। देयर इज नथिंग मोर peaceful than to enter in a class when you know कि oh I revised the last lecture and I know कि इस lecture में क्या पढ़ाने हैं। I am put together, I did my homework, I am fine। तो आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में इतना प्रेशर होता है इन चीज़ों का। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे मतलब कि मैं भी यूनिवर्सिटी गई हूँ, तो मेरा इतना नहीं था कि ऑब्वियसली अगर क्विज है तो देयर वाज मोर इंटेंस प्रिपरेशन यू नीड, लेकिन अगर इट्स जस्ट अ नॉर्मल लेक्चर तो यू जस्ट मतलब कि इट वाज गुड टू फील, क्योंकि कुछ टीचर्स रियली डोंट केयर, दे डोंट गिव अ शिट कि
स्टूडेंट्स कुछ पढ़ के आए हैं कि नहीं, लेकिन इट्स गुड टू नो फॉर योर सेल्फ कि ओ आई नो कि क्लास में क्या चल रहा है, देन टू बी कम्प्लीटली ब्लैंक इन द क्लास। ठीक है, दैट वॉज वट दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। लेकिन मैं बात क्या करी थी, मैं बात करी थी कि यू नीड टू हैव योर टॉप प्रायोरिटी, और कि मुझे आज ये काम करना है। ठीक है, ताकि यू कैन फोकस ऑन दैट एंड देन यू कैन मतलब फील अकम्पलिश्ड एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आप, और मुझे लगता है कि दिमाग में ना आप ओवरवेलम हो जाते हो, क्योंकि अगर आपका एग्जाम्स है तो आपके 8 कोर्सेज हैं और आपको हर चीज़ के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आप सोच लोगे कि ओ मुझे आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर यू कि आज मैं ये सब्जेक्ट करना है, ये चैप्टर करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये क्वेश्चंस करने हैं, ये करना है। तो प्लीज़ प्लान फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ हैव अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द डे, और maybe tweet about it or put an Instagram story about it. Okay, this is what I wanted to do today. And a friend of mine, a dear friend of mine who also listens to my podcast, मुझे बता रही थी कि she listened to me and she made a account, whole account, Instagram account dedicated to her goals, और every day she would post stories कि मुझे आज ये काम करना है, and because she would post stories about it she would feel accountable कि ओ मैंने I posted about it तो I have to मतलब कि do this। और फिर वो जब वो काम करती थी तो she would like make this check, टिक टिक, आई डोंट नो वो मतलब कि वो ऐसे मतलब कि उसके साथ टिक लगा के देन शी वुड अपलोड एंड से कि ओ आई डिड इट। तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग कि अगर आप मतलब कि इफ यू थिंक दैट रियली वर्क्स फॉर यू, बिकॉज दैट रियली वर्क्स फॉर मी। इफ आई शेयर समथिंग with 2000 people के oh I'm gonna do this today, और फिर उसके बाद I feel a little bit accountable कि शायद मुझसे को, वैसे तो no one cares, नहीं people care, ठीक है ना, लेकिन still it's nice, कभी कभी आपको ना कोई चाहिए होता है, कोई पुश चाहिए होता है। आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई पर्सनली थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट, या आप किसी को बता दो कि आई टुडे आई एम गोना डू दिस, देन टू कीप इट इनसाइड यू। इट समटाइम्स वर्क, या फिर कहीं लिख लो इफ यू आर द जर्नल टाइप ऑफ पर्सन, तो आप अपने सिर्फ जर्नल पे लिख लो कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू टुडे, और फिर एट द एंड ऑफ द नाइट इट वुड बी सो सेटिस्फाइंग फॉर यू टू क्रॉस इट, and you will feel accomplished and you will feel like you're thriving this summer. Now, speaking of top priority of the day, the thing that is also important for you is that you should also have an activity of the day, or it could be anything. It could be walk, it could be reading something, it could be a show you're watching, an episode of the show you're watching, not binge watch, ठीक है ना, or the chapter of the book you're reading, or anything that provides you pleasure, that provides you joy, that brings makes you happy. I would really recommend to have that in your day, because that's the thing at the end of the day that you look forward to and makes you feel excited. And as I said earlier, that you have to associate some things with that phase or that season. Jesse, there's this book in my sister's bookshelf, and I told her, "Okay, oh, I want to read this," and she was like, "Read it in the summers because it have summer vibes to it." And I really like that. That I am associating, she's associating this book for me for summers. Matlab, that's so cool. And then you'll remember that there's this show I watched in summers, and I literally जब भी वो time आता है तो I remember that. So I think it's good to associate things with that season, लेकिन you have to do an activity. I personally would really love to मतलब कि get badminton and play badminton, लेकिन I know I wouldn't do that, and I would also love to buy a cycle and ride it, लेकिन I know I won't do that either, लेकिन if you have that and that makes you happy then do that, लेकिन for me it's more like कि I could read a chapter of a book, or I could मतलब कि watch that season I'm watching or that series I'm watching, same thing, मतलब कि whatever you feel, मतलब कि add some activity to your schedule or what, मतलब even if you don't have a schedule, लेकिन make out time, make sure you're making out time for that activity. Or again I would say कि it's so much better to read something or to watch a YouTube video or even a episode of your series
देन टू स्क्रॉल ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें भी उन एप्स में यू थिंक दैट स्क्रोलिंग इज अ क्विक थिंग एंड यू विल, मतलब क्या आपको हो गया अच्छा मैं 5 मिनट तक देख के बंद कर देती हूँ, लेकिन घंटे गुजर जाते हैं और आप नहीं करते। तो इससे बेहतर है कि आप वो 5 5 मिनट बचा के एंड पे एक ग्रैंड चीज कर लो, नॉट ग्रैंड लेकिन आप वो चीज कर लो, और इससे बेहतर है। और अगर आपको बहुत लग रहा है आप उसी वक्त वो एपिसोड देख लो, बेशक 5 मिनट की देख लो, 10 मिनट की देख लो, लेकिन इट्स सो मच बेटर टू एक्चुअली वॉच समथिंग और रीड समथिंग देन टू स्क्रोल, क्योंकि आप स्क्रॉल के बाद आपको और ओवरवेलम फील होता है और आपको और स्ट्रेस होता है और कुछ भी नहीं होता। आई हैव पर्सनली सीन और फेल्ट कि मुझे एंग्जाइटी ज़्यादा होती है जब मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस में हूँ और मैं ऊपर से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हूँ। तो यू हैव टू, मतलब कि strict be strict about that कि don't scroll social media, however मतलब कि make sure you are watching something or reading something, मतलब कि make sure you are having something fictional, मतलब कि if that is something that brings you comfort, क्योंकि मुझे fiction बहुत पसंद है। और मतलब कि I'm really trying to watch a lot of stuff this year, लेकिन मैं मुझे लगता है कि it's a part of adulting, लेकिन I don't know what it is, लेकिन I can't binge watch और binge read, if binge read is a term। लेकिन मैं एक चैप्टर से ज्यादा नहीं एक दिन में पढ़ सकती, या दो, एक सिटिंग में मैं एक चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, और मैं एक एपिसोड से ज्यादा भी कोई चीज नहीं देख सकती एक सिटिंग में। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग, इट वर्क्स, एंड आई मतलब कि आई थिंक आई वुड रियली इंकरेज यू ऑल कि अगर आप कोई चीज डे टू डे कर रहे हो तो इट्स मच बेटर टू वॉच वन एपिसोड or even half episode or a chapter a day than to binge watch something कि वो एक episode मतलब कि be patient, and I personally think it's much more enjoyable जब आपकी वो चीज काफी दिन तक रहे आपके साथ than to finish that thing in one night। तो मेक टाइम फॉर एक्टिविटी एंड मतलब कि कंट्रोल योर एक्टिविटी, ठीक है, अपने आप को पाबंद करें थोड़ा कि मैंने इतने टाइम पे यही करना है। लेकिन इफ फिक्शन इज नॉट समथिंग दैट ब्रिंग्स यू कंफर्ट, देयर माइट बी समथिंग एल्स, जैसे कि मैंने कहा मे बी गो फॉर अ वॉक, मे बी गो, देयर वुड बी सम स्पोर्ट दैट वुड ब्रिंग यू दैट जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस। बात ये है कि यू हैव टू हैव दिस थिंग, मतलब कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस एंड यू हैव टू ऐड इट इन योर डेली रूटीन। वरना इफ स्क्रॉलिंग टिकटॉक इज रियली समथिंग दैट ब्रिंग्स यू जॉय तो फिर वो कर लें घंटे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी इजीली एक्सेसिबल है ना कि आप सोचते हो कि ओह मैं तो वो किसी भी टाइम कर लूंगी, मैं तो अभी बैठ के कर सकती हूँ, मैं रात को सोने से पहले कर सकती हूँ, मैं उठने के फौरन बाद अपना मोबाइल चेक करते हुए कर सकती हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मतलब कि दैट्स रियली इजीली एक्सेसिबल फॉर यू। बट फॉर अ but if you are watching an episode of something and if you want to read a book तो you have to wait, okay, कि मैं इस ये काम पहले I would get this task done और फिर मैं ये चीज आराम से बैठ के करूंगी, तो it feels much more uh, it brings much more joy to you and it makes you feel much more accomplished, I don't know it if it's made it makes sense, लेकिन बहरहाल have an activity for yourself or that would make you really excited to go through your day। Okay, next is more like the things you can add in, मतलब कि it's not about productivity लेकिन it's about the good things that you can there, मतलब कि they're more about the materialistic thing, they don't have to do anything with the mindset, yeah, with an approach, ठीक है, लेकिन first of all wear sunscreen और it's summer, ठीक है ना। और my skin, by the way, my skin nowadays is thriving क्योंकि I have gotten a little bit intentional with skincare और I know the ingredients, I know मतलब कि I'm learning about the chemicals and what goes in and what my skin needs, so my skin is really 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 good nowadays, मतलब I'll explain it further, लेकिन बात ये है कि मुझे लगता था कि यू मैं सिर्फ आई वुड यूज मॉइस्चराइजर्स ओनली इन विंटर्स क्योंकि उसमें मेरी स्किन ड्राई होती थी विदाउट रियलाइजिंग कि आई शुड गो बाय अ लाइट मॉइस्चराइजर फॉर समर्स। और व्हाट आई डू मतलब कि मैं कोई आजकल कोई खास चीज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी सीरम, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी एक्सफोलिएटर स्पेशल या फिर कोई फेस मास्क कोई कुछ, आई एम जस्ट क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग और वी डू दैट दोज थिंग्स ऑन डेली बेसिस, लेकिन आई एम मच मोर इंटेंशनल विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़े मतलब क्या
वैसे मेरा ये सनस्क्रीन के बारे में बात करी थी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ स्किन केयर। खैर, स्पीकिंग ऑफ स्किन केयर के, सो द इंग्रेडिएंट्स, इफ यू हैव अ स्किन लाइक मी, इवन इफ यू डोंट हैव अ स्किन लाइक मी, क्योंकि मेरी स्किन इज वेरी नॉर्मल, लेकिन वॉट एवर योर स्किन टाइप इज, द टू इंग्रेडिएंट्स दैट आई फिगर आउट आई need for my skin is niacinamide and hyaluronic acid. और मेरे पास दो मॉइस्चराइजर्स हैं, दे आर मतलब कि लाइट मॉइस्चराइजर्स, दे आर ऑफ पॉन्ड्स, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, और वन इज जेल बेस्ड जो हाइलुरोनिक एसिड वाला है। एंड हाइलुरोनिक एसिड इज रियली 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 वर्किंग फॉर माई स्किन, क्योंकि अब जो है मतलब कि आई एम स्टार्टिंग टू फील दैट लिल शाइन इन माई स्किन, तो दैट इज रियली गुड। और जब से मैंने स्किन केयर स्टार्ट की है, व्हाट आई डू इज दैट के मॉर्निंग में मतलब कि आई क्लेंस, जो कि मतलब कि आई हैव दिस फेस वॉश, मतलब कि वट एवर रेगुलर फेस वॉश यू हैव, मतलब कि मेक श्योर यू आर यूजिंग अ जेंटल फेस वॉश. I realized that scrubs really sometimes are really harsh on your skin, so maybe you shouldn't use that every single day. लेकिन just buy a gentle cleanser or face wash for yourself. Cleanser and face wash are like not that different. मतलब फेस वॉश ही है. क्लेंजर इज अ फैंसी टर्म फॉर, नहीं, क्लेंजर इज लाइक रिमूवर, मतलब इट वुड क्लेंज वट एवर इज ऑन योर फेस. फेस वॉश इज लाइक, आई डोंट नो, मैं अभी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन फेस वॉश वर्क्स, ठीक है ना. तो इन द मॉर्निंग आई वॉश माई फेस विद अ क्लेंजर एंड देन आई मॉइस्चराइज एंड देन आई पुट ऑन सनस्क्रीन, ठीक है. और माई स्किन वॉज बैडली अफेक्टेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माई यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं पहन रही पहन रही थी, मतलब कि आई वॉज नॉट वेयरिंग सनस्क्रीन, पहन रही थी तो आई वॉज नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन, एंड देन आई रियलाइज के सनस्क्रीन इज नॉट जस्ट मतलब के a bougie thing that rich people wear, क्योंकि मतलब कि an extra thing, it's an important thing. तो please go buy a sunscreen if you don't have it, and please use it. जैसी भी है जो भी है यूज करें. मेरी जो सनस्क्रीन शुरू में थी मतलब कि it had a white cast इन इट, और वो बहुत बुरा था, लेकिन आई ट्राई टू, और मैं एक और नई नहीं ले सकती थी क्योंकि वॉज एक्सपेंसिव दैट फॉर दैट टाइम, तो आई यूज इट एनीवेज, ठीक है ना. इतना ज़्यादा इतना हैवी नहीं था वाइट कास्ट, लेकिन इट स्टिल हैड सम. तो लेकिन बी इंटेंशनल विद योर सनस्क्रीन. देयर इज दिस वीडियो ऑन इंटरनेट, on YouTube internet. There's this video on YouTube by this Pakistani dermatologist, actually Madiha, और she have she's मतलब के recommending the best sunscreens in Pakistan. तो डू वॉच दैट. लेकिन मेरे पास जो है मतलब क्या है, पर्सनली मैंने अभी पर्सनली ऑनलाइन ऑर्डर कहीं से भी नहीं कराई. मैं क्लिनिक गई थी और मैंने उनको कहा सनस्क्रीन दे दे, उन्होंने कहा ये लें. क्योंकि मैंने पिछले साल ली थी और तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी स्किन केयर की, और ना ही मुझे इतने इंग्रेडिएंट्स पता थे, लेकिन वो अभी तक चल रही है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको फेंक के नहीं मंगवा लूँ. तो बेसिकली मतलब कि बात ये है कि सनस्क्रीन यूज़ करें, ज़रूर करें. इट वर्क्स, इट हेल्प्स, इट्स रियल. आई नो, मुझे मैंने अपने भाई को कहा कि यार सनस्क्रीन यूज किया करो, तो वो कहता है कि पहले जमाने में भी तो नहीं लोग यूज करते थे, तो व्हाट्स द डिफरेंस. तो मैं उस चीज का ये जवाब नहीं दे पाई. आई नो देयर माइट बी सम आंसर टू इट, लेकिन यूज सनस्क्रीन, इट वर्क्स. मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्किन मतलब कि माई स्किन क्वाइट लिटरली बर्नड फ्रॉम द सन, और मैं सनस्क्रीन, आई वुड रिफ्यूज टू वेयर अ सनस्क्रीन, आई वुड रिफ्यूज टू वेयर अ सनस्क्रीन, आई डिडंट हैव अ सनस्क्रीन. तो देन आई बॉट अ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन रियली हेल्प्स. मेक श्योर यू आर, मतलब कि कुछ लोगों की बीबी क्रीम या वट एवर फाउंडेशन और बीबी क्रीम दे आर यूजिंग, उस पर लिखा होता है कि SPF 30 है इसके अंदर, बट इवन इफ योर वट एवर यूर वेयरिंग हैज़ एन SPF 30 इन इट, यू स्टिल नीड अ सनस्क्रीन. तो वो मतलब कि, तो प्लीज डू अ स्टेप ऑफ सनस्क्रीन बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप एंड आफ्टर डूइंग योर स्किन केयर. और स्किन केयर जब मैं बोलती हूँ तो मेरा मतलब बिल्कुल भी सीरम्स या कोई ऐसी कोई हैवी या टोनर या ऐसी कोई चीज़ का नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद ही अभी तक वो चीज़ यूज़ नहीं की. आई एम जस्ट क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एंड देयर इज अ होल ह्यूज डिफरेंस इन माई फेस. हालांकि मैं पहले भी करी थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई रियली डू इट एट नाइट, ठीक है ना. मैं रात को
करती हूँ, पहले मैं रात को नहीं करती थी, स्पेशली क्योंकि आई स्टे एट होम ऑल द टाइम। तो मैं कहती थी ओ मैं कौन सा कहीं बाहर से थक के आई हूँ या फिर मैं बाहर की हवा खा के आई हूँ जो मेरा फेस, मतलब कि मेरा फेस वैसे का वैसे है। लेकिन नाउ आई रियली डू इट एट नाइट टू एंड एट मॉर्निंग टू। तो फिर उस वजह से मतलब कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑन with my face. My face is much more soft, there's a shine in my face, और I use sunscreen। तो उस वजह से भी अगर मैं बाहर भी जाऊँ, if I step outside, तो my skin is like protected and मतलब कि it's, क्योंकि मेरी स्किन अगर मैं सनस्क्रीन के बगैर सूरज में जाऊं तो मेरी स्किन बहुत डल हो जाती है। तो उस वजह से जब से मैंने सनस्क्रीन यूज करना शुरू की है तो इट डजेंट इफेक्ट माई स्किन। ठीक है ना? आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट वेल। लेकिन स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ मॉइस्चराइज। तो इस वजह से आई एम पर्सनली यूजिंग पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर, दे आर वेरी लाइट, पता भी नहीं चलता, मतलब कि दे लिटरली डिसअपियर आफ्टर अप्लाइंग। और दे मतलब के दे आर रियली गुड। तो और दे आर नॉट दैट कॉस्टली, दे आर रियली नॉट दैट कॉस्टली। तो इस वजह से आई वुड रियली रिकमेंड टू गेट दोज। या फिर जो भी अगर कहीं और कंपनी के कोई अच्छे लाइट मॉइस्चराइजर मिल रहे हैं। द टू इंग्रेडिएंट्स आई एम रियली इंजॉइंग एंड लाइकिंग आर नाइसिनामाइड एंड hyaluronic एसिड। मेरे पास दो मॉइस्चराइजर्स हैं क्यों आई वॉज अ बिट इम्पेशेंट। आई वॉन्ट रियली रिकमेंड दैट। और एक में नाइसिनामाइड है और एक में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। लेकिन कुछ मॉइस्चराइजर्स में भी ये दोनों हो और एक की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो, एक की परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर स्किन रियली नीड्स। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्किन टाइप है जिसके लिए मैं ये चीज़ ना रिकमेंड करूँ। मतलब आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट बाय द वे, लेकिन आई हैव वॉच्ड अ प्लेंटी ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट। तो आई डोंट थिंक कि मतलब they really say कि niacinamide is an ingredient for all skin type and so is hyaluronic acid. So अगर you want that dewy and glowy skin तो you should really add those two ingredients to your skin care. अगर आपको acne है और dry skin है या oily skin है then there is a lot of ingredients that you can add too. Maybe you can buy a serum of that or moisturizer or add it in your face wash। लेकिन यू हैव टू रिसर्च फॉर दैट। मैं ये बता सकती हूँ अभी, लेकिन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट स्किन केयर। तो मतलब कि ऑब्वियसली लेकिन मतलब कि आई एम जस्ट सेइंग दैट बी अ बिट इंटेंशनल विद योर स्किन और यू डोंट नीड टू बाय दोज हैवी ड्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज करी हूँ जो कि एवरीवन यूजेस, एवरीवन हैव। ये मैं शायद तीसरी बार करी हूँ एंड माय स्किन ऑलरेडी हैव so much different, मतलब कि my skin already feels different, it's soft, it's smooth and glowy even though I have had a pimple today। लेकिन उसके अलावा it's working really well। पिंपल का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो जो मैंने कल व्हाइट सॉस पास्ता खाया था उस वजह से तो इस मतलब आई वोंट ब्लेम इट। लेकिन मतलब कि वेयर योर सनस्क्रीन टू, ठीक है ना? क्लेंस मॉइस्चराइज बोथ, मतलब कि सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। और रात के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि why I'm shouting, रात के टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज एंड मॉइस्चराइज। क्योंकि और इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग हैवी टू योर, नॉट हैवी लेकिन अगर आप कोई ट्रीटमेंट सीरम या कुछ ऐसे करके लगा रहे हैं ना, इफ यू आर बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन, तो मोस्टली पीपल अप्लाई दोज थिंग्स एट नाइट। या मतलब कि आई डोंट नो वट एवर योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड। लेकिन अगर आप कोई स्लीपिंग मास्क लगा रहे हैं या कुछ कुछ भी करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू डू इट एट नाइट, क्योंकि तब आप सोए होते हो तो और यू आर मतलब कि यू आर नॉट आउटसाइड, तो योर स्किन रियली can work on those, मतलब कि the ingredients can really work, I don't know। लेकिन at the morning I personally would like to wear those ingredients that would protect my skin from the dirt and sunlight। and at night I would try, मतलब कि I would apply those ingredients that are मतलब doing something, that are treatment whatever। this is not a स्किन केयर वीडियो, मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन खैर क्लेंस मॉइस्चराइज एंड पुट एन एसपीएफ ऑन इन द मॉर्निंग, ठीक है? और please do not sleep without washing your face, please don't do it, don't do it to yourself। it's not good for your skin, or you have to take care of your skin right now ताकि आगे जाके your skin is healthy and मतलब whatever
We need to move to the next topic. Okay, since I'm raving so much about hyaluronic acid, I would just like to add that what it does is that it's very gentle. It's for all skin type. I believe that. Like, and you have to research before getting it क्योंकि I research everything before getting something or I am not a professional dermatologist लेकिन it's very gentle, it's for all skin type and it's a humectant which is a fancy word I learned from a dermatologist, but what it means is that कि it's a hydrator, so it really keeps your skin hydrated and it what what it does is that कि जो आपकी हाइड्रेशन ऑलरेडी है इट कंट्रोल्स दैट इट डजेंट लेट योर स्किन लूज दैट आई होप दैट मेक्स एनी सेंस लेकिन और उसकी वजह से जो है इट गिव्स योर स्किन दैट डूई लुक जिससे आपकी स्किन मतलब कि योर स्किन शाइन्स एंड इट फील्स लाइक दिस पर्सन इज वेरी मॉइस्चराइज एंड वेरी हाइड्रेटेड क्योंकि आप की स्किन मतलब कि और आपकी स्किन ड्यूई तभी होती है जब ड्राई नहीं होती तो इफ़ योर स्किन इज रियली ड्राई इट्स बिकॉज योर स्किन यू आर नॉट हाइड्रेटेड इनफ एंड यू आर नॉट मॉइस्चराइज इनफ तो दिस इंग्रेडिएंट्स moisturizes your skin and makes your skin hydrated so it's a hydrator लेकिन the next thing is that कि whatever you are putting inside yourself has as much as effect on your skin as you are putting on your skin. I hope that makes sense. मतलब कि जो आप अपने अंदर whatever you are eating also have the biggest effect on your skin the way the things you are putting on your skin have. ठीक है? I hope that made sense. As I was telling कि मैंने white sauce pasta खाया उसकी वजह से मुझे पिंपल निकल आया तो मतलब I hope that made sense. खैर I'm tired लेकिन I have to get this done. We are already 56 minutes in, so I hope that I could get this done and upload it and then sleep. क्योंकि it's 3 a.m. And I was telling you all कि I have to wake up early. लेकिन देखना I'll wake up early कल से और I'll update you all on Instagram. तो make sure you're following me on Instagram. It's at the brown girl rants on Instagram. That was a good promotion over here. लेकिन खैर तो speaking of hydration or speaking of hyaluronic acid that controls hydration, you have to also drink water to keep make yourself feel hydrated. अगर आपने पानी पिया नहीं है तो hyaluronic acid कुछ नहीं कर सकता. So make sure you are drinking enough water this summer. So please get yourself a cute water bottle and keep yourself hydrated this summer. I know मैंने इस बारे में पहले भी बहुत बात की हुई है लेकिन it helps. I swear to God it helps. It really helps and it makes your skin much more fresh और आपको dryness भी नहीं होती. It helps with the pimples. It helps with anything. It's the best thing you can ever give to yourself. Not the best thing लेकिन it's the most natural and the most and the cheapest thing if not free that you can give to yourself to keep yourself hydrated. Get yourself a water bottle क्योंकि I am more excited to drink water from a water bottle than from a glass. Or obviously when you are outside so you can't keep sipping water after every minute क्योंकि then you have to go to the washroom. लेकिन at least मतलब कि जितना standard पानी पीना चाहिए उतना मतलब कि keep a check on yourself या अगर आपने water bottle ली हुई है तो set a goal in your head कि मुझे ये पूरी करनी है या मुझे 2 पूरी करनी है तो फिर मतलब कि don't starve yourself on water. मैं यूनिवर्सिटी में ऐसा बहुत करती थी मैं पानी नहीं पीती थी क्योंकि मेरे पास वाटर बॉटल नहीं होती थी और मैं बैठी रहती थी और मुझे इतना फील नहीं होता था और इट वुड मतलब कि डैमेज माई स्किन इट वुड मेक माई स्किन ड्राई तो डोंट डू दैट योर सेल्फ. अगर आप हाइलोरॉनिक एसिड नहीं भी यूज करें ना इट्स ओके वाटर इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ना दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी मतलब हैविंग टू हैव अ बेटर स्किन ठीक है. तो और मतलब कि ओवरऑल भी मतलब कि सिर्फ स्किन की बात नहीं है मुझे लगता है कि इट रियली हेल्प्स विद मतलब कि फॉर मी ड्रिंकिंग वाटर मेक्स मी feel active too, more active and more fresh. I don't know how it works but it works. So basically please keep sipping on water. Another exciting thing about summer is that the fruits that are coming up, I think summer has मतलब कि comes with really good and beautiful fruits that also taste good
or I personally really want to enjoy every single fruit ever, and it really makes me excited. I am really excited. I am so hyped for the fruits. और जब भी मैं fruits, and again fruits also do so good for your skin. They're also good. They good do good for your body. और जब भी मैं fruits खा रही होती हूँ ना, like I just had watermelon, और मैं जब भी फ्रूट खा रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ वाओ, आई एम रियली लाइक फीडिंग गुड स्टफ टू माई बॉडी, मतलब आई फील सो गुड व्हेन एवर ईट फ्रूट। और मैं पहले मतलब इतनी फ्रूट्स की जो है मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, और मुझे इतनी कदर नहीं थी, लेकिन नाउ आई रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देम, एंड आई रियली इंजॉय देम, कि जब भी मेरे घर में आते हैं आई मेक श्योर कि आई एम हैविंग फ्रूट्स। तो fruits is a very beautiful thing. First of all, it's very good for your body, and I don't know, I hope you feel the same. मतलब I was, whenever I eat food or I get fruit for myself, so I feel so proud कि I'm doing so good for my body and my skin, and they are so refreshing. So fruit is the best thing ever. So I hope कि you all enjoy every single fruit that is coming in this month, क्योंकि they are really मतलब कि one of the best things about this season, the fruits. Or I really want to have fruits for my breakfast. Like I want my breakfast to be based on fruits and yogurt. Yogurt is also another thing that I associate with summers, क्योंकि in winters I can't, मतलब कि it's not that, it's मतलब कि winter you can have yogurt in winters, लेकिन I enjoy yogurt more in summers, क्योंकि उस वो मतलब कि it's क्योंकि वो ठंडी होती है। वैसे तो सर्दियों में भी ठंडी, मतलब कि इट्स रिफ्रेशिंग, ठीक है। और व्हाट आई इन्वेंटेड, नॉट आई डिडंट इन्वेंटेड, लेकिन व्हाट आई फिगर्ड आउट दिस रमजान इज दैट कि मैं दही नहीं खाती थी, लेकिन आई स्टार्टेड कटिंग माई स्ट्रॉबेरीज इनटू योगर्ट, and it would level up the yogurt, and I'm so excited for every fruit that would come, क्योंकि then I would cut it into chunks and I'll put it in the yogurt, and that would make my yogurt so much better, or that would be my breakfast. So there are two things that I really want to add in my summer meal. One is yogurt, or yogurt is a very good thing, and I have मतलब के figured out कि I'm not that good with milk, क्योंकि it makes it मतलब कि it gives me a stomach ache, it gives me a stomach pain, not pain, it doesn't gives me diarrhea. Like I don't think I'm lactose intolerant, लेकिन having milk just really doesn't work for me. लेकिन I love yogurt, I live for yogurt, so I really want to add yogurt in my meal, especially in breakfast for the summer, and I really want to add fruits, and they are two really good things. They are refreshing, और you'll feel good. They're feel good things, मतलब कि आप जब भी खा रहे होते हो तो you think कि oh I'm eating so healthy, I'm so productive, I have my life together, I am thriving. तो मुझे लगता है कि if you will have those two things, you'll really feel that man, I'm really thriving for this summer. I don't know, I hope that makes sense, लेकिन मेरा personally ये goal है कि I have to add these two things in my breakfast. Not add, मतलब I want these two things to be my breakfast, and I think that that would really make me thrive for the summer, क्योंकि I'm eating healthy, and I think that eating healthy मतलब कि we think that मतलब कि obviously we eat क्योंकि we associate eating with pleasure, लेकिन if you are eating well then it's a part of thriving, मतलब कि you, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी खा लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हैं या बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो यू फील ग्रोस, आई पर्सनली फील ग्रोस। तो इफ़ आई वुड बी ईटिंग समथिंग सो गुड, so obviously I'll feel good. So make sure you add fruits, and make sure you enjoy a lot of fruits, and make sure you add yogurt if milk doesn't work. I love milkshakes. So I'm really excited for mango milkshakes. I am really excited. I am so hyped. It's making me smile. So again, मतलब कि we are talking about fruits which come in summer. So we are associating our summer with that fruit, and thinking about that fruit is making us happy. So which would make summer a bit bearable for us. So I hope that makes sense, and I hope you can feel my intention behind this podcast is to remind you those things,
that would make summer a bit bearable. Like, and I'm so excited for the fruits, I'm so excited for the milkshake, I'm so excited to add the fruits in my yogurt, and I am really excited. Or these are the things that are really natural, they are not harmful, there's no disadvantage to it unless you're not allergic to it. I don't know, I haven't heard that, like, and I hope you're not. Like, and I am personally really excited to enjoy every single fruit ever, which and yogurt and milkshakes. The Also, there's a lot of vegetables coming up for summers, which is also very exciting. I personally don't I love आई मतलब क्या आई लव कुकिंग, ठीक है ना, मैं रुक गई क्योंकि मैंने बहुत पैशनेट होके कहा, मतलब कि आई एम नॉट अ शेफ लेकिन आई रियली इंजॉय कुकिंग, लेकिन आई डोंट हैव एनी क्रेजी प्लान्स फॉर दिस समर कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है, क्योंकि आई मोस्टली एसोसिएट माई कुकिंग, आई मोस्टली लाइक कुकिंग इन विंटर एंड फॉल, क्योंकि आई मोस्टली बेक or I make pasta or something that involves cheese and all those things that I really want to cut off this summer. तो देर्स मतलब कि आई डोंट वांट टू बी दैट क्रेजी विद फूड कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वॉट एवर आई एम ईटिंग आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट्स हेल्दी एंड इट्स गर्मियों की सौगात, क्योंकि गर्मियों में बहुत सब्जियां भी आती हैं एंड आई रियली वांट टू इंजॉय दैट। तो मतलब कि स्पीकिंग ऑफ मतलब कि what makes me excited for summers is the fruit and vegetables that are coming, and I want to enjoy it, and I hope you all enjoy those vegetables too and fruits too, क्योंकि I think that that would make you excited for summer. I hope so, or I hope I'm not repeating things, or I hope this podcast is enjoyable, क्योंकि I don't know, I'm all over the place right now. लेकिन that's the thing that is also मतलब कि would make you thrive for summer, मतलब कि it would make you feel good, and when you'll feel good then you'll feel like you're thriving. Now we are talking more about the clothing, the accessories that could help you beat the heat. So we need to protect ourselves from our sun, from not our sun, yeah, our sun. We need to protect ourselves from the sun. So what the thing that I would really मतलब the accessory that I think is very useful and I want you all to have it and or to buy it is a hat, not the magician or the hat, the baseball cap, basically the P cap. Is it called the P cap or the T cap or a hat? I don't know, but again, you get it right. The baseball cap. So I want you all to have that. It's first of all, it's very cute. ठीक है ना? It's not ugly. It's very cute. You can buy them off from Daraz. I think के मतलब कि they're of some good rate. मैं हमेशा एक black color की लेती थी and it wouldn't have some very beautiful या cute pattern on it. मैं सिर्फ black plain basic लेती थी and it would look so good. So you can buy any color you want. Black really works, लेकिन you can buy whatever color you want. लेकिन get a cap. एक तो it would protect your whole face from the heat. ठीक है? You will have this thing on the cap, I hope, that is protecting your whole face from the heat. Like, sun is not touching your face. I know maybe your head would get a little sweaty wearing that cap, लेकिन I don't think कि it would be a much of a difference. गर्मी है तो ही तो your head is sweating, तो अगर आप वो उतार भी देंगे तो भी it would sweat. लेकिन at least you're protecting your face from the sun. So wear that cap and it looks so cute. You can style it or you don't need to style your hair then in summers when you're wearing a cap. And मुझे personally it would make me so much better. मतलब कि I would always wear a cap in summers in campus, especially in my early semesters. I also had an umbrella क्योंकि umbrella also protects you and लेकिन umbrella carrying an umbrella is a big thing. और obviously अगर आप group of people में चल रहे हो तो you can like share your umbrella with 2 or 3 people but not more than that. और मेरी umbrella personally बहुत annoy करती थी सबको, वो उसकी जो वो edges थी वो लोगों की आंखों में भी जाती थी, तो it's not that convenient to carry all over. लेकिन you can have the hat और मतलब कि it's not necessary to wear it everywhere. जब आप कभी कहीं इंडोर बैठे हो तो यू कैन टेक इट ऑफ, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो यू कैन पुट इट ऑन, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो यू कैन पुट इट ऑन. इट वुड प्रोटेक्ट योर स्किन फेस. एन अम्ब्रेला वुड बी गुड इफ यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, क्योंकि इट्स मतलब कि इट्स हार्ड टू कैरी इट अराउंड, लेकिन इफ यू कैन तो यू शुड,
क्योंकि इट्स अनदर वेरी गुड थिंग, और वो तो फिर आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है फ्रॉम द सन। एंड द थर्ड थिंग इज, जो कि मैं करती नहीं थी, आई वुडेंट डू इट अंटिल नाउ, इज वियर सन ग्लासेस। मुझे लगता था कि आई लुक सो अगली इन सन ग्लासेस, सन ग्लासेस इज नॉट द थिंग फॉर मी, मुझे पहननी ही नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ ही नहीं है, मतलब कि आई डोंट वांट टू डू दिस फैशन, क्योंकि आई वुड टेक इट एज अ फैशन एक्सेसरी। लेकिन इट हेल्प्स सो मच, मतलब कि इट प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द हीट। और इट, मतलब कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन इट्स एन essential, I would say, for summer. If you're listening to this, please get yourself a pair of shades. You need it. Obviously you can try on whatever frame is suiting your face, or जैसे my mom really likes big shades, और मैंने अभी तक आई एम येट टू फिगर आउट कि मुझे कौन सा स्टाइल मेरे फेस कट के हिसाब से सूट करेगा। आई एम जस्ट वेयरिंग वट एवर आई हैव, लेकिन इट वर्क्स। और मैं ना, जब वेन एवर आई वेयर सन ग्लासेज, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड वेयरिंग, तो वेन एवर आई गो आउट तो मैं पहले सन ग्लासेस उतार के देखती हूँ सब कुछ, और फिर मैं सन ग्लासेस पहन के देखती हूँ। आई टेल माई सेल्फ इट्स सो मच बेटर वेयरिंग अ सन ग्लासेस। तो प्लीज वेयर अ सन ग्लासेस, इट्स नॉट अबाउट फैशन। यू थिंक यू लुक रिडिकुलस, लेकिन ट्रस्ट मी, अदर पीपल डू नॉट केयर। मुझे लगता था मैं जोकर लगती हूँ ऐनक में, लेकिन इट्स सो गुड टू वेयर सन ग्लासेस। प्लीज डू योर सेल्फ अ फेवर, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड तो wear a sunglasses. And things like these, like wearing a pea cap or wearing a sunglasses, would not make the heat less intense for you. ना, it would make the heat less intense for you, मतलब कि वो जाके गर्मी का टेम्परेचर नहीं कम करेगी, लेकिन it would make it a bit bearable for you. To get yourself sunglasses, please do yourself a favor, you would thank me. They are so good, they are game changing. और इट्स, मतलब कि इट रियली स्टिंग्स जब जो धूप जिस तरह की होती है जून और मई में, तो गेट योर सेल्फ अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस। um, with clothing, I mostly wear obviously शलवार कमीज। इफ यू, मैंने, मुझे नहीं याद कि मैंने गर्मियों में लास्ट टाइम जीन्स कब पहनी थी, और स्पेशली जब स्किनी जीन्स का फैशन, थैंक गॉड वी आर ओवर बाय इट। आई वुड लाइक टू बाय थिन पैंट्स, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी जीन्स दैट इज थिन अनफ कि आप, मतलब कि क्योंकि ट्राउजर इज मेड ऑफ कॉटन, तो इट्स वेरी थिन एंड यू, मतलब कि enjoy, यू डोंट enjoy, लेकिन इट्स वेरी लाइट और इट्स गुड। और इस वजह से आई मोस्टली एसोसिएट देसी कपड़े विद समर। देन अगेन आई एम सो एक्साइटेड, मतलब कि आई एम नॉट, क्या मैं बोल रही हूँ, खैर, आई एम एक्साइटेड फॉर समर क्योंकि आई एम एसोसिएटिंग colors and I'm associating clothes with that season. तो पर्सनली आई, मतलब कि मैं हमेशा शलवार कमीज या ट्राउज़र कमीज ही पहनती हूँ। इफ़ यू वेयर जीन्स तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आई डोंट नो हाउ समवन कैन वेयर जीन्स इन समर, मुझे लगता है मेरी टांगे गल जाएंगी। और इस वजह से आई डोंट रियली वेयर जीन्स इन समर्स। मे बी आई डू जब मौसम अच्छा हो। नहीं नहीं, मैं पहन लेती हूँ, लेकिन आई मोस्टली प्रेफर शलवार कमीज क्योंकि इट्स सो लाइट एंड एरी, नॉट it's so light and it's I really need to go to sleep. It's so light, or खैर, it's light. I am not even cutting that, ठीक है, it's light और it's I don't know, लेकिन wear शलवार कमीज। और I personally love wearing pastels, if you know, मैंने अभी ईद पे भी pastel ही पहना था। If you follow me on Twitter and Instagram, which if you don't then you should, लेकिन I love wearing yellow and pink and all those light colors in summers. Like I love associating colors with summers, okay, oh this is summer's aesthetic. तो आई डोंट रियली वेयर ब्लैक इन समर्स, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे दिमाग में वो साइंस एक्सपेरिमेंट जो मैंने 5 क्लास में पढ़ा था चल रहा है कि जब आप काले कपड़े पहनते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। दैट द ब्लैक कलर, आई डोंट नो कि ब्लैक कलर absorbs more heat. I don't know. Like, and I like to wear light colors in summers, and I would recommend you should too. It's not, like, it would not do anything with the heat, like, and it would make you feel good. So you should like wear yellow color or white or pastels or pink
or green, light green or light blue or sea green, ठीक है ना, for summers. So yeah, that's it. I don't think there's anything left. Yeah, acha, the thing, like I do have a little bucket list. I would really love to go to the north this summer. और मुझे वैसे किसी से कोई खास उम्मीद नहीं है अपनी फैमिली में, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं लास्ट कब गई थी, लास्ट में 2017 में गई थी। वो भी देयर वाज मतलब के देयर वाज पीपल गोइंग, ठीक है ना, और मैं मतलब कि आई गॉट द चांस टू गो विद देम। ठीक है, मैंने खुद से प्लान नहीं किया था, ना ही मेरी फैमिली ने प्लान किया था, क्योंकि दे डोंट लाइक अपेरेंटली गोइंग टू नॉर्थ। और आई वुड रियली लाइक टू गो एंड वी हैव अ प्लान टू गो, तो आई होप इट वर्क्स आउट, क्योंकि मैं जिंदगी में सिर्फ 3 बार नॉर्थ गई हूँ। एंड देयर वाज दिस चैलेंज एवरीवन वाज डूइंग ऑन ट्विटर कि मैं स्कर्दू गई हुई हूँ, मैं यहाँ मतलब कि देयर वाज ऑल दीज northern areas of Pakistan and everyone was मतलब के checking them, ticking them कि वो I have मतलब कि I have gone there और मैं उनमें से एक जगह भी नहीं गई हुई थी, तो I need to go। तो इस वजह से I hope I go out for north this summer। लेकिन I also अगर मतलब कि मैं नॉर्थ ना जा पाई, खुदा ना खास्ता, तो my short not short my little thing in bucket list is that I really wanted to go for movies। I really want to watch a lot of movies। I think a lot of good movies are coming out, so I really want to go and watch them, क्योंकि एक तो cinema is the chillest place in Pakistan। और दूसरा ये कि I love watching, मतलब I'm really into fiction nowadays, so I would really love and go watch movies। हाँ, also if you want to really beat the heat and make your summer a bit productive, then do listen to podcasts, especially to the Brown Girl Rants। I am signing off here. I hope this episode was entertaining for you all. It was really entertaining for me, but it was also a struggle for me, so that's really a reminder for me to record my episodes a day earlier and at a good time। लेकिन इमेजिन अगर मैं नेक्स्ट एपिसोड सुबह के 9 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंशाल्लाह आई एम मैनिफेस्टिंग दिस राइट नाउ कि नेक्स्ट एपिसोड वट एवर टॉपिक इट इज, वट एवर आई एम रिकॉर्डिंग इट एट 9 AM। और अभी मैंने ये पॉडकास्ट में बोल दिया, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस एपिसोड। आई होप वी ऑल कलेक्टिवली थ्राइव दिस समर। वी आई एम मैनिफेस्टिंग इट, और इंशाल्लाह वी वुड। Best of luck with whatever is happening and in your life, not in life मतलब कि not in a negative way, लेकिन whatever exams or whatever group project or final year projects you're dealing with, best of luck with that। And I hope whatever I told in this episode would maybe help you a little bit in making your day a bit better। If it doesn't, so I'm sorry, I would try better next time। लेकिन I hope it did, और I'll see you guys next Wednesday। और अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और देखना चाहते हैं, तो यू नो वेयर टू फाइंड मी। आई रियली रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल पर्सन एवर, क्योंकि मैं बहुत वेली हूँ एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियली टॉक टू मी अबाउट पॉडकास्ट, विच इज सैड। इट्स नॉट सैड, लेकिन यू नो वेयर टू फाइंड मी, और आई सी यू गाइस next week। और let's मतलब के have a good summer and let's not be that sad or cursed or that mad or pissed on summers, क्योंकि summer I bye 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 bye।